નમસ્કાર, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા પોલીસ સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ અને ડોનેટ લાઈફ ફાઉન્ડેશને મળીને અંગદાન જાગૃતિ માટે પ્રશંસનીય પહેલ કરી છે। વિશ્વ અંગદાન દિવસ નિમિત્તે વિશેષ અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રેસકોર્સ રોડ સ્થિત સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં વડોદરા શહેર પોલીસ અને ડોનેટ લાઈફ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી મોટા પાયે અંગદાન જાગૃતિ અભિયાન યોજાયું હતું। કાર્યક્રમનો હેતુ લોકોને અંગદાનના મહત્વ વિશે માહિતગાર કરવાનો અને જીવન બચાવતી આ પ્રક્રિયા માટે પ્રેરિત કરવાનો હતો। આ ત્રિપક્ષીય સહયોગ હેઠળ બ્રેન્ડેડ દર્દીઓ માટે તબીબી સહાય, સમયસર અંગ પુનઃપ્રાપ્તિ અને ગ્રીન કોરિડોર દ્વારા ઝડપી પરિવહન સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। કાર્યક્રમમાં પોલીસ કમિશનર નરસિંહ કુમાર, પદ્મશ્રી નિલેશ માંડલેવાલા, स्टर्लिंग हॉस्पिटल अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों और तबीबी स्टाफ उपस्थित रहा था। नमस्कार, मेरा नाम अजीत झा है। मैं आसिया रेसकोर्स स्टर्लिंग हॉस्पिटल का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त जो से हम सब मनाते हैं, ताकि हम सब बड़ौदा वासियों के बीच लोगों को अंगदान की महत्वपूर्ण भूमिकाएं समझाई जाए। बहुत सारे मिसबिलीफ हैं लोगों में कि अंगदान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। उन सब चीज़ों को लेकर हमारे डॉक्टर ने समझाया क्या अंगदान होता है, और समाज से जो जुड़े हैं पुलिस प्रशंसक, धर्मगुरु, ये सब मिलकर बताएं कि अंगदान क्या चीज़ है। और अंगदान महादान है, तो इसे करने से ना हिचकिचाए। और जैसा कि कहा कि गुजरात स्टेट नंबर 5वीं लिस्ट पे है। क्या ये मुहिम, देखिए कोई भी चीज अवेयरनेस की हो, वो मुहिम एक दिन से नहीं मुहिम बनती है। इसे आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, इसे आपको लगातार समाज तक पहुंचाना पड़ेगा। लगातार जो जिस लोगों को जरूरत है अंगदान की, आपको उनसे मिलना पड़ेगा और समाज में एक अवेयरनेस कार्यक्रम करते निरंतर करना पड़ेगा, ताकि आपको सक्सेसफुल रिजल्ट देख पाए।